क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम आपको चैप्टर 5 से कोल एंड पेट्रोलियम का क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए, choose the most appropriate answer. Question number 1. क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल रिसोर्स नीड टू बी कंजर्व बिकॉज पहला we are using them faster than they are used by nature. दूसरा they are slowly disappearing from the earth. Third one is if we overuse them, nature will stop replenishing them. D, all of these. Answer होगा B. Answer number 2. Question कहता है कि it is an important fraction of petroleum. It is further distilled to get lubricating oil and paraffin wax. आंसर होगा डी, रेसिड्यूज। आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3, कोल मेनली कंटेन्स ए, कार्बन। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल? एंथ्रासाइट। आंसर होगा सी, एंथ्रासाइट। आंसर नंबर 5, which of the following is a non-polluting fuel for vehicles? Answer होगा D, CNG। Answer number 6, in destructive distillation coal is heated strongly to about, answer होगा B, 1000 degrees Celsius। Answer number 7, which of these is not a natural source of energy? Answer होगा C, electricity। Answer number 8, fossil fuel are A, renewable but existable। Answer number 9, which of these is not a fossil fuel? Answer D, hydrogen। And last, answer number 10, which of these is obtained by destructive distillation of coal? आंसर होगा बी, coal gas। सेक्शन बी हम लोग देखते हैं अब। सेक्शन बी, और सेक्शन बी है गिव वन वर्ड आंसर। गिव वन वर्ड आंसर। आंसर नंबर 1, आर नेचुरल रिसोर्स लिविंग, नॉन लिविंग और बोथ? ये हो जाएगा बोथ। आंसर नंबर 2, पेट्रोलियम इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एज इट इज नेचुरली renewed in a millions year? True। True। Answer number 3, the process of conversion of wood into a coal is called carbonization। Answer number 4, the variety is the variety of coal with maximum carbon content? Anthracite। Anthracite। Answer number 5, Answer number 5, petroleum and natural gas were formed from dead organisms? Answer number 6, in fractional distillation hydrocarbon with the highest Answer number 7, name 2 fuels obtained from petroleum which can be used as domestic fuel? Kerosene and LPG.
Answer number 8. Which fuel is used in jet aeroplanes? Kerosene. Answer number 9. Name one non-polluting fuel for vehicles. CNG. Answer number 10. Which is the color of the crude oil pumped out from a well? Black. Black. Answer number 11. Which petroleum product is used for surfacing roads? Residues. Residues. Answer number 12. Name the petroleum product used to manufacture candles, Vaseline, grease, polish, etc. Residues. Answer number 13. Which is the ultimate source of energy for fossil fuel? Sun. Answer number 14. The fuel obtained from coal that is almost pure form of carbon. Coke. तो ये था वन वर्ड आंसर सेक्शन बी से। इसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर देखते हैं सेक्शन सी से। सेक्शन सी। सेक्शन सी आंसर नंबर 1। क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स गिवन 2 एग्जांपल ऑफ ईच। रिन्यूएबल रिसोर्स या फिर ऐसे देते हैं द मेन difference between renewable and non-renewable resource are the renewable resource cannot be exhaust or they replenished during short period of time. Short period of time. They also found in abundant amount. Whereas non-renewable resource it cannot replenished replenished during short period of time, and their amount is also limited. Example: renewable resource
एयर, सनलाइट, etc. Non-renewable resource, coal, पेट्रोलियम। आंसर नंबर 2। बट आंसर नंबर 2 हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं।